Hey guys, welcome back. We are live now. If you are new here, my name is Harshit and I'm a final year BTech undergrad preparing for my placements. And Infosys is coming on campus in my college and I am preparing for it. Before that, for your context, I started this channel as a challenge for me to be consistent and disciplined every single day by solving problems regularly. Okay, and before this series, I took a challenge to solve 455 problems in Striver's A to Z sheet in just 45 days, out of which I could only solve 240 problems. And I have streamed it live on YouTube and I have shared the recorded session on my channel. You can watch it out there as well if you want to, and you can join us live daily if you want to be consistent as well. Hey Rohit, how are you? What is up? In the morning, I was a little confused. That is why we could not had a good conversation. And this is my plan for today. What we need to do, we need to learn about binary search tree basics and standard problems. And before that, the remaining topics that I had to do in the morning, but I could not do, such as symmetric tree, balance trees, left view, right view, sum of left leaves, and quick revision. So these things I have like skipped revising arrays and strings, but we are learning three node structure. ये आज हमने कर लिया है. And in order, pre-order, post-order, traversal भी हमने कर लिया है. Post-order, post-order. रोहित पांडे, where are you? कमेंट करके गायब हो गए आप तो. Okay. What shows zero concurrent viewer? Am I connected with the Wi-Fi? Yes, you are. Concurrent viewer, the number of viewers connected to the stream at the most recent approval is 9. Thumbnail change. Yes, I have changed a little bit, but है तो वैसा ही. Thumbnail तो यही था कल भी, लाइक सुबह भी यही था, तुमने देखा नहीं होगा. Oh, let's get back to it. We will solve three problems on the topics tree traversal. Okay, so let's get back to it. This is the file that we were following to learn the implementation. Let's quickly revise the types of binary tree. Binary tree is a tree the in which the every node has two childs, okay, child nodes, left and right,
Okay, that is a complete binary tree, but a binary tree has at most two child. Okay, every node has either zero or two children. No node has only one child. This is strictly binary tree. Okay, complete binary tree. All the levels are complete filled except possible the last level, and the last level has all nodes as left as possible. So the first node that we create after creating the root node is the left node. Okay, and the properties are used in heaps can be efficiently stored in array for node at index I left child is equals to 2i plus 1 ये तो ठीक है we will learn about it later. All internal nodes, yes, the right screen is visible. All internal nodes have exactly two children and all leaves are at same level, la or ra. So okay, perfect binary tree. And then balanced binary tree, height difference between left and right subtree of any node is at most 1. Okay, properties, degenerate skewed tree. Okay, and the comparison, full binary tree has all nodes have two or zero childrens. Okay, childrens. And complete binary tree and perfect binary tree. Perfect binary tree has or two or zero childrens, but complete binary tree has okay complete levels, but the last level can be incomplete. Okay, so that is complete binary tree, and perfect binary tree has zero or two children on all the nodes. Last level filled with left to right only in complete binary tree, but in perfect binary tree it is complete. All leaves same level. In perfect binary tree all leaves are on the same level. Okay, most efficient. Perfect binary tree is the most efficiently stored in array used in expression trees, heaps, theoretical. Perfect binary trees are a theoretical concept. Okay. These code we have studied in the morning. Now let's solve these problem. Count total nodes in a binary tree. Let's open our browser and let's search for this problem. Count number of nodes tree. Complete binary tree. Okay, given the root of a complete binary tree consisting of n nodes, the task is to find total number of nodes in the given binary tree. But okay, but the input will be a tree. What will be the input? Let's open the problem. And let's see, you are given a root of a complete binary tree. Your task is to find the count of nodes. Okay, we have the root node only. Okay, a complete binary tree is a binary tree whose all level except the last one are completely filled. The last level may or may not be completely filled, and nodes in the last level are as left as possible. Okay, so we need to count the number of nodes. And how can we do that? By using recursion. If root is equals to null, we will return okay, we will return 0. Else we will return 1 plus
count nodes of root dot left plus count nodes of root dot right. So this way it will be counting all the nodes. And if you have studied about recursion earlier, you will understand how it is happening. And I think I should explain as well what we are doing. People getting mail for HR interview. Okay, so what we did, we just returned, the main statement was return 1 plus count node of left, मतलब root dot left plus count node of root dot right. Okay, ये तो दिख ही नहीं रहा होगा ना तुम्हें, या तुम लोग कमेंट करके बता दिया करो। अब दिखा, कोई देख भी रहा है तो क्या कर रहा हूँ, मतलब बिल्कुल रिकॉर्ड ही नहीं हुआ जो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया। This was the problem, how I have solved it. Let me explain again. First test case to pass हुआ है, but it is not tested on all the test cases. This is the problem. You are given the root of a complete binary tree. Your task is to find the count of nodes. A complete binary tree is a binary tree whose all level except the last one are completely filled. The last level may or may not be completely filled, and nodes in the last level are as left as possible. Design an algorithm that runs better than O of n. अब जो मैंने सॉल्यूशन लिखा था वो O of n तो नहीं रिटर्न करेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। Your task complete the function node star root which takes the pointer of the root of the given manual tree and returns the count of its number of nodes. यहाँ पे better than O of n लिखा हुआ है, but यहाँ expected time complexity log of n square लिखा हुआ है. This is the time complexity that we will get after using recursion. So this is the code. If we encounter root node is equals to null, we will simply return 0. Okay, and then after checking if the root is not null, what we will do, we will return 1 plus 1 for counting the current node, that is root node or maybe the next node that we will be calling in recursive function, and then we will call this same function recursively to count the number of nodes in root dot left, that is the left subtree. It will return the count of the nodes in left subtree, and then again we will call this method to count the number of roots in the right subtree. Okay, this way it should work properly. And nodes, count nodes, count node, here it should be nodes, spelling mistake, and let's submit it, hoping that the time complexity will be as expected.
Okay, time limit exceeded. 20 test cases could not be executed. So how we can do improve it? What is the problem that might be we are encountering? Suppose this is a tree, and in complete binary tree the left node is created first. So 5 and maybe 6. If there are 6 nodes, then what we are doing, we are calling the count node function, which will get 1 as the input. This is the root node. Okay, so the count node method will take root as the input, and inside this what we are doing, we are calling the same function recursively for the left subtree and the right subtree. All good, Anish bro, how are you? Count node root, and inside this what we are checking, if the root is equals to null, that means if the root is null we are returning 0 simply, and then we are returning 1 plus the recursive call for the same function root dot left. It will give input of the left subtree recursively for the same in the same method. We are recursively calling this inside the same method. Okay, and it will loop again, and this will become the root node for the next iteration, and it will again count for the left subtree of the root node, and then it will encounter root is equals to null, so it will return 0, but it will get added to 1 and get back to it. And also here the next keyword, it will add the number of nodes in the right subtree to count node in root dot right. So what is happening inside the same method, it will now calculate for 1 plus root dot left. How can I optimize it? That is what I am trying to figure out. So what will happen here? It will return the left dot left wala root, and it left dot right. इसका सिंपली मीनिंग ये है कि लेफ्ट सब ट्री का लेफ्ट नोड एंड राइट नोड. ओके,
So what's going wrong to optimize it? It will then calculate the right node of the left subtree, then it will get back to the root node, and then get back to the main root node, and then the hmm, so what's going wrong with the solution? When we are encountering null pointer or null node, we are returning 0. Otherwise, we are returning 1 plus count nodes of left and right. Without wasting time, let's look into the solution. 1 plus L plus R, ये तो सेम ही है जो हमने किया अभी. A new node with the given data. What is the better approach? We know how to traverse the tree using recursion or using data structure like stack and queue, but the problem is that consume and space because we need traverse elements, so they need to be required to be stored in specific data structure. Recursive function uses sometimes called the call stack, which consumes O and space. You can learn even more about which points to the current node. Continuous step work till the current node pointer is not null. If the left of the pointer is null, increment count and move to right. If the left pointer is not null, make another temporary pointer to one left of the current pointer and move towards the right tail. It's not null. What does it mean? Find the number of nodes. Let's take two variables, current and previous. So the previous is equals to null, current is equals to the root node. Continue the following process until the current node is null. If current is greater than left, what does it mean? ये क्या लिखा हुआ है? Okay, now it read previous to right until previous right. अच्छा ठीक है. Okay, sorry. It is still confusing. इतना लंबा कोड लिखना पड़ेगा. What is it doing? Tree node root binary tree. Okay. If data is less than root dot data, root dot left is equal to. I'm good with that brute force approach, and we can improve on it with the help of ChatGPT. Explain the better approach to solve the same problem in less than big of मतलब less time complexity than big of n. Please tempt us into brute force wondering counting all nodes by walking to every corner. That's your current method. It's clean, correct, ON, but it ignores lovely geometric trick hiding in a complete binary tree. If the tree is just any binary tree, there is no faster method. You must touch every node, but when the interviewer says count node in fewer than ON, then they are almost always talking about complete binary tree, a CBT. CBT is a filled level by level, left to right, like seating people in a cinema row by row. Okay. Magic in these, a complete binary tree can contain perfect subtrees. A perfect binary tree with height h has exactly 2 to the power h minus 1 nodes. Okay, this was the formula that we had studied.
and that is what we need to use. Where is it? Hmm, complete binary tree. Here's complete binary tree, and height is equals to log base 2 of n. Mhm. And for node at index I, left child is equals to 2i plus 1, right child is equals to 2i plus 2, parent is equals to I minus 1 by 2. Not getting. Number. Okay, this is the maximum nodes only. Okay, let's get back. The fastest strategy, compute the left height distance to bottom following only left pointers. Compute the right height distance to bottom following only right pointer. If they are equal, the subtree is perfect. You don't need to recurse into it. You directly compute node as height. Okay. If they differ, the tree isn't perfect. Your recurs into left and right children. This avoids exploring large chunk of the tree. A complete tree of size n has height approximately, what is it? Each recursion computes 2 height log of n. You recurse down at most log n times. Total becomes okay log square. So we will create two variables, left height, right height, and a helper method left depth, right depth. And while node is not null, we will keep increasing the height. Node is equals to node dot left, return height. Okay. Cylon. Hey Cylon, am I pronunciating your name correctly? What do you want to prepare for Infosys? Bro, जितना मुझे पता है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ क्वी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे, मीडियम और हार्ड वाले, और इजी प्रॉब्लम होगा, लाइक not at all easy, but the first problem that they are expecting us to solve at least will be from array and strings and typical standard patterns like sliding window, two pointers, and so different methods of strings. Okay, so and maths related problems also, basic maths, right? So the first problem is expected to be easy, but I don't think that it is going to be easy. But the remaining two problems will be really very difficult. Very difficult. वैली क्यों बोल रहा हूँ मैं? आर को एल बोल रहा हूँ यार. मैंने सोचा था कि ये स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने के बाद ना मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत इम्प्रूव हो जाएगा, बट डे बाय डे मुझे ऐसा लग रहा है डिग्रेड हो रहा है यार. मैं और ज्यादा फंबल कर रहा हूँ, जो पहले नहीं करता था. जिन वर्ड्स पे फंबल, उन वर्ड्स पे फंबल कर रहा हूँ अब मैं. क्रेजी. Okay, let's try to implement the same. What he has done, we will check root is not null and we will calculate the left height, the right height. If the perfect subtree, we will return mm, left shift operator of left height minus 1. Hmm. Okay, otherwise recurs. This is the same method that we have written. Okay, and we will calculate the depth using while loop iteratively. Mm, okay, left depth, right depth, two methods that we need to create. So here we have int left height is equals to left depth of root dot left, right, and right height is equals to right depth of root
dot right. Okay, and we will create these helper methods. Public left, public int left depth is equals to node root, and if root is equals to null, return, and int h is equals to 0, while, sorry, here statement यहाँ नहीं आएगा. We will create int h is equals to 0, and then while root is not is equals to null, we will iterate h plus plus and then left depth of root dot left. Okay, this will return the depth of the left subtree, and then we will return h. Okay. Mm, yes, it should work. And similarly, we will create the helper method for right subtree. So it will be right depth h, and root is not is equals to, it will call right depth and root dot right. Okay. Then we will check if the height of the left subtree is equals to the height of right subtree. If left height is equals to what was there, this is the formula to return the height if the heights are equal. और यहाँ पे रूट होगा, टोटल लेफ्ट राइट नहीं होगा. Is equals to right height, then we will return one left shift operator. यहाँ पे क्या आना था, left height -1. Otherwise we will do this. And the remaining code is correct. Node is equals to node dot right. Okay, recursively copy करने की जरूरत नहीं है. This is what I was doing wrong. So for node करता हूँ, while node is not null, we will just update node is equals to node dot left, and in the right node, right subtree, we will do the same. While node is not null, we will update the node with node dot right. Let's run it. L y y y.
public static. It worked. Now let's see if the edge case get passed or not. Okay, it is working now. Uh, Earlier we had implemented the brute force approach. Hmm, And let's move to the next problem that we can solve in our sheet. Sheet. Count leaf nodes. Leaf nodes are the ones on the end of the tree. On the last level of the tree. So, okay. Count leaf node trees. Problem, practice problem. Okay, given a binary tree of size n, you have to count leaves in it. For example, there are two leaves in the following tree. Or a leaf is the one which has no child. Okay. Hmm. So how can we do that? We have to check the left dot right. Hmm. Given a binary tree, you have to count leaves in it. Okay, leaf is something 3, 5, and 1. And there's a difference between leaf and leaves. Okay, by singular plural. Leaf node is both left and right child nodes of it are null. Okay, so there are three leaf nodes, 3, 4, and 5. Okay, so all those nodes in which ये तो ChatGPT को भी है. All those nodes in which the left and right child are null. Hmm. Same method लगाते हैं while node not equals to null. Here we hmm, what problem can be arised? Int n is equals to 0. Mm, we need to check the left and right, both the base case will be if mm, node is equals to null, return 0. What should be the logic? If I'm traversing a tree and I need to get to the last node, let's say this is the route, we go on left and we will check if it is null. It is not null, we will go on its left and check if it is null. If it is not null, we will go on its left and then check if it is null.
If we encounter null, then we will check its right. If both left and right are null, then we will count it as okay, a leaf node. Okay, and it will recursively go to all the leaf nodes. Hmm. So we need to if node dot left is equals to null and node dot right is equals to null, then only we will consider the current node as the leaf node. Hey Ibrahim, bro, I'm preparing for Infosys on-campus recruitment and currently I'm learning key data structure that I had not studied earlier because it is frequently asked in Infosys assessment. Hmm, Return 0. Hmm, Here we will return 1 if both the nodes are null, and then we will return recursively count leaves of node dot left plus count leaves of node dot right. It seems to be the correct implementation. It is the correct implementation and it is working, and I hope all the edge cases should be executed well. Okay, it works. Okay, it is working. So our implementation is correct. And let's move to the next problem, that is okay, यहाँ पे we should do this. Mm-mm. Yes, this problem is done. Count leaf node is done. We need to find the height of binary tree. Let's do that. Height of binary tree. It is also an easy problem. Let's search for it. Height of binary trees.
Maximum depth or height of a binary tree, here we have already implemented this. And level order traversal of and time, we will learn about it after implementing our own solution in our own way. So what we given the root of a binary tree, your task is to find the maximum depth of the tree. So let's say int d is the depth of the tree is equals to 0, and while root is not equals to null, we will keep updating d plus plus, and root is equals to root dot. Okay, binary tree, अगर रूट डॉट लेफ्ट नल हुआ तो रूट को लूट बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं? If root dot left is equals to null, then we will do यहाँ तो सबसे पहले एक बेस केस आ जाएगा. If root is equals to null, we will return 0. Okay, and if root dot left is equals to null, then we will check if here the root will be updated with root dot right. And root is equals to root dot left, and we'll keep going on. Return d. Okay, good, but expected output is 2, but we are returning 3. We are iterating while the root is not null. So we will start with -1. Let's say इसमें explanation दिया है क्या क्या? What is the convenient way? So if this is the given tree, so its height should be 3 according to me, but according to them it is 3. Let's run. So we will start with -1, and now it has the correct answer. Let's submit it. Sixth test case पर लुढ़क गया.
What's wrong with this? पहला अप्रोच ही नहीं काम किया. We are returning -1 when we are encountering null. Okay, we need to calculate the left height and the right height, and we'll return the maximum. This is the thing. Simple. Here we will return -1 if it is null, and then we will create two variables. Int l height is equals to height of root dot left, and int right height is equals to height of root dot right, and then we will return one plus, oh sorry, maximum of, but यहाँ पे increase कब होगी? +1, हाँ ठीक है. We will return left height plus right height, oh, maximum of the two. So math dot max of left height comma right height +1. Okay, now it will work. Hey Nikesh Kumar, how are you, buddy? And how is it going on? कैसा चल रहा है कॉलेज लाइफ? Okay, let's see the next approach for the same problem, level order traversal, that we have not studied yet. In level order traversal, we process the tree level by level. At each step, we note the number of nodes in the current level, process exactly those nodes, and enqueue their children. After finishing each level, we increment the depth counter by the time the deck is empty. The counter reflects the maximum depth or height of the tree. Okay, ये वाला अप्रोच मैंने शायद देखा था श्रद्धा खापरा दीदी का. So we will create a queue. Okay. फाइनल एग्जाम एंड सेम का एग्जाम तो अच्छा गया. क्वेश्चन पेपर जो एक्सपेक्ट किया था उससे तो एकदम ही अपोजिट आया. अभी लास्ट 4 ईयर से सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे, बट इस साल नहीं हुआ. सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया रिपीटेड पैटर्न से. बट स्टिल वो थ्योरेटिकल एग्जाम था तो अच्छा गया. इट वाज गुड. Q dot write root into depth is equals to 0, loop until the queue is empty, while Q dot is empty, level size is equals to queue size. Traverse all nodes at the current level. Level order traversal. इसके लिए वीडियो देखना. Level order traversal. This is the one. थर्ड चीज जिसका इस्तेमाल किया वो है हमारी BFF. हम नल को वापस डाल देंगे और अब निकालेंगे 2 3 को जैसे ही प्रिंट करवाया उसके को हम बाहर निकाल लेंगे और 1 को करेंगे लेवल वाइज. तो फर्स्ट लेवल पर है ये भी खाली. अब हम 4 को प्रिंट करवा सकते हैं. तो आउटपुट में पहले आएगा 4, फिर जाएंगे 2, एक फंक्शन बना हमारी सब ट्री रूट को. बस वही पोस्ट का क्या मतलब है, यहाँ पर रूट अपने ट्री पर तो 4 के पहले लेफ्ट सब ट्री को देखेंगे वो तो खाली है, फिर राइट सब ट्री को देखेंगे वो हमें लीनियर टाइम लग रहा होगा, यानी बिग ऑफ एन का टाइम. नेक्स्ट रिवर्सल जिसकी हम बात करेंगे और जो काफी इंपॉर्टेंट है उसका नाम है लेवल ऑर्डर रिवर्सल. लेवल ऑर्डर में हम डेटा को प्रिंट करेंगे लेवल वाइज. तो फर्स्ट लेवल पर 1 है तो प्रिंट होगा 1, सेकेंड लेवल पर 2 और 3 है तो प्रिंट होंगे 2 और 3, थर्ड लेवल पर 4 5 6 है तो प्रिंट होंगे 4 5 6.
और हर लेवल के बाद हम एक नेक्स्ट लाइन ज़रूर दे रहे होंगे। तो इस तरीके से हमारा लेवल ऑर्डर का डेटा कुछ ऐसा दिखेगा। इसको हम सिंपली नहीं कर सकते, यानी अभी तक हमने जो प्री ऑर्डर किया था, इन ऑर्डर किया था, पोस्ट ऑर्डर किया था, तीनों को रिकर्जन से किया था। हम लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में आइटरेशन का यूज करेंगे, आइटरेटिवली करेंगे, रिकर्जन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इस ट्रावर्सल के लिए हम एक और डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, वो है हमारा क्यू डेटा स्ट्रक्चर। क्यू एक बनाएंगे, क्यू को यहाँ पर क्यू यूज करें ताकि हम उसकी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकें। हमें क्या करना है, वन को अपनी क्यू में स्टोर करा लेंगे। अब जैसे ही एक लेवल खत्म हो गया, वन को हम बाहर निकाल लेंगे और वन को करवा देंगे प्रिंट। जैसे ही एलिमेंट को बाहर निकाला, उसके दोनों चिल्ड्रन को वहां पर स्टोर करवा दो। वन का लेफ्ट चाइल्ड है 2, राइट चाइल्ड है 3, तो क्यू में जैसे ही वन को बाहर निकाला, पहले स्टोर कराया 2 को, फिर स्टोर कराया 3 को। अब बाहर निकाल लेंगे 2 को करवा देंगे प्रिंट। 2 को बाहर निकाला, वैसे ही उसका लेफ्ट राइट वहां पर स्टोर करवा दो, यानी 4 और 5 को हम और कंफ्यूज कर देते हैं सिंपल सी चीज में। चलो अगले भी नल नल है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या आया, सबसे पहले 6 और नल, तो वो इसके नोड्स है, 6 और नल इसके नोड्स है। फिर मैं लिखता था इसी का नोड नेक्स्ट, ठीक है, इसी डेटा टाइप की ट्री बना हुआ है। ये क्या है, 1 से 2 3 अटैच्ड है मेरे, फिर हमारे, ठीक है, लेकिन आ जाते हैं एक बार, कुछ भी नहीं है, प्लस सम क्या हुआ, -10 इज द मैक्सिमम, ठीक है, सम बिल्कुल सही, 4 नहीं आनी चाहिए बस। रिकर्जन, मेरी हाइट भी बेसिकली मैंने, और मैं अपना क्लास नोड भी लिया। इनके बाद मैं वापस जाऊंगा पोस्ट होना जरूरी है। इनके बाद मैं जाऊंगा पोस्ट, फिर मैं इसके इन में आ गया, तो n इज इक्वल टू वो पर्टिकुलर चीज जब आ गई 1 आ गई तो ये प्रिंट हो गया। लेकिन मैं नीचे तो फिर भी क्या, उसको मैं अगर अवॉइड कर भी लूं तो जितना भी मेरा जितने भी nth लेवल है, आप ये समझिए ना, पूरे जाने में n वो लग रहे हैं, फिर चीजें कम लगेगी। इधर आ जाते हैं, वैसे बिग ऑफ n ही लगने वाला है यहाँ पे भी, ठीक है, इधर आ जाते हैं, तो बिग ऑफ n का ऑपरेशन लग रहा है। और अगर मैं सारी लेवल्स को प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं सारी लेवल्स को प्रिंट करा रहा हूं फॉर लूप से, तो मेरा फॉर लूप का कोड कितना है, लेवल टाइम्स है, ठीक है। यहां देखिए, इधर देखिए, ये लेवल टाइम्स चल रहा है कोड, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है लेवल टाइम्स। और हर बार जब ये कोड चल रहा है तो इट इज टेकिंग बिग ऑफ n। अभी के लिए जो हमारा कोड चल रहा है जो कि ऑप्टिमाइज नहीं है, तो जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो भी लेवल होता है मेरा लॉग ऑफ n। अगर टोटल एलिमेंट्स मेरे n है तो मैंने आपको बताया लेवल लॉग ऑफ n है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो मेरी nth लेवल की लग रही है, सारे अगर मेरे को लेवल ऑर्डर प्रिंट करना है तो वो लग रही है बिग ऑफ, वो लग रही है मेरी। देखते हैं पहली बात तो यार, जब मैं nth लेवल प्रिंट कर रहा हूं तो एक बात बताओ यार, जब n इक्वल टू 1 आ गया किसी पर्टिकुलर जगह और मैं उसको प्रिंट करा रहा हूं, तो मैं उसके नीचे क्यों जा रहा हूं, मैं n इक्वल टू 0 के कॉल क्यों लगा रहा हूं, कोई भी जरूरत यहां पे नहीं है, राइट, कोई भी जरूरत यहां पे नहीं है। तो एक काम यहां पे किया जा सकता है कि जब ये काम हो गया, ये ऑर्डर ही लगा लो। वैसे इन ऑर्डर में भी कुछ नहीं बिगड़ रहा आपका, किसी भी ऑर्डर ट्रैवर्सल में आपको बस ये काम करना है, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूं, 2 मिनट का काम है, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पे आ जाते हैं एक बार kth लेवल, इसी पे कर लेते हैं यार। मैं अपने प्री इन पोस्ट के अंदर ही kth लेवल रख रहा हूं, क्योंकि मेरे पास प्री यही है। प्री देखिए भैया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं प्रिंट करना चाहता हूं, मान लीजिए मेरे को प्रिंट करना है, मैं अपने इस प्री को उठा लेता हूं, इधर आ जाइए, मेरा यही ट्री है, इसको इग्नोर करो, इसकी बात करते हैं एक बार यार, जब इसी की बात हर समय कर ही रहे हैं। इधर देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे टोटल लेवल्स कितनी है, यहाँ पे लेवल्स है 1 2 3, तो मुझे मान लीजिए nth लेवल प्रिंट करनी है। पहली बात तो आप नंबर ऑफ लेवल्स प्रिंट करा सकते हो, बिल्कुल। हाइट फंक्शन पे जाओ, हाइट आपको निकाल के दे देगा, तो हाइट फिर +1 कर दो तो आपको लेवल मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हाइट इसकी 2 है तो लेवल 3। एनीवेज हम वो तो मैं तब कह रहा हूं कि अगर आपके पास ऐसा कोई सीन आ जाए कि आप n = 5 दे दो यहाँ पे, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो कुछ भी प्रिंट होके नहीं आएगा उस केस में, टेंशन मत लेना। यहाँ पे मैं लेवल दे दूंगा, यहाँ पे मैं लेवल दे दूंगा एक बार के लिए n। अब बस फंक्शन देखना मैं करूंगा क्या, ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, एक यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ पब्लिक स्टैटिक, तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ void, क्योंकि प्रिंट करा रहा है nth लेवल, ठीक है, void nth लेवल, जिसके अंदर मैं एक तो अपनी रूट भेजूंगा, साथ ही साथ मैं अपना एक n नंबर स्टार्टिंग में भेजूंगा, ठीक है। मुझे बस क्या करना है, अगर कभी गलती से n = बना रहा है, पर उससे पहले अगर रूट मेरा नल हो रहा है तो यहीं से रिटर्न मारो, कॉपी पेस्ट करता हूं आपके सामने, एक काम करते हैं कॉपी पेस्ट, ठीक है। क्यों ये मेहनत करूं, अपने प्री ऑर्डर को उठा के कॉपी पेस्ट, प्री ऑर्डर की सारी चीजों को लो, nth लेवल में लाओ और कॉपी पेस्ट करो, ठीक है। रूट अगर नल है तो रिटर्न, बस एक केस क्या होगा, अगर गलती से n = 1 हुआ है तो आप उस समय प्रिंट करा दो अपनी रूट की वैल्यू, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके आगे एक स्पेस भी दे दो, बहुत सही। अब हर समय मेरे को करना क्या है, प्रिंटिंग हमेशा नहीं करानी, देखो यही तो कंडीशन है। ये जो मैं चीज कर रहा था, ये बस मैं इसकी कंडीशन में ये वाली चीज कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हर समय नहीं कराना मेरे को। और जब मैं कॉल लगा रहा हूं तो कॉल में दूसरा पैरामीटर भी देना है, हर समय मैं एक कम करके दूंगा, हर समय। तो होगा क्या, एक्चुअली में अपने आप ही हर लेवल में एक वैल्यू कम होते हुए मेरे को मिलती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे प्री ऑर्डर नहीं लगेगा, इसलिए एरर आ रहा है, ये देखिए सिंपल। अब एक बार कोड को चला के दिखाता हूं मैं आपको, सिर्फ nth लेवल वाले ही प्रिंट होंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊं पोस्ट ऑर्डर की जगह, ठीक है, यहाँ पे लिख लूं nth लेवल, और मैं चाहता हूं मैं अपनी फर्स्ट लेवल को प्रिंट करूं, तो देखना क्या होगा, पहला 1 प्रिंट हो जाएगा, सिर्फ देखो 1 प्रिंट हो गया। अगर मैं सेकंड लेवल प्रिंट करता हूं तो 2 3 प्रिंट हो जाएगा, ये देखो 2 3 प्रिंट हो जाएगा। लो भाई, थर्ड लेवल करता हूं तो 4 5 6 7 प्रिंट हो जाएगा, 4 5 6 7 प्रिंट, क्योंकि है ही नहीं कोई एलिमेंट वहां। या अभी क्या भी पूछूं भाई, अगर मैं nth लेवल प्रिंट करना चाहता हूं तो इसका मतलब मैं अपनी फर्स्ट लेवल को प्रिंट करना चाहता हूं, जानता हूं। अगर मेरे को लेवल्स प्रिंट करनी है तो मैं देखो क्या कर सकता हूं, यहाँ पे प्लीज, यहाँ पे देखो, इसी के अंदर मुझे पता है, जैसे मुझे इस ट्री के अंदर पता है मेरे पास 3 लेवल्स है, तो अगर मैं लिखूं nth लेवल 1, बार-बार एक चीज चलाऊंगा, ठीक है, तो पूरा अलग लाइनों में भी ऐसे प्रिंट करा सकता हूं कि nth लेवल, इसके बाद मेरे को दे दिया मैंने ये, ताकि मेरे को लगे कि मैं ट्री ही प्रिंट कर रहा हूं। ये देखो, तो ट्री ऐसा ही था, 1 के चाइल्ड 2 3 थे, फिर उसके बाद 2 के चाइल्ड 4 5, 3 के चाइल्ड मेरे 6, ये कराना है,
इनफैक्ट मैं इनको अलग लाइनों में भी ऐसे प्रिंट करा सकता हूँ कि nth लेवल, इसके बाद मेरे को दे दिया मैंने ये, ताकि मेरे को लगे कि मैं ट्री ही प्रिंट करा रहा हूँ। ये देखो, तो ट्री ऐसा ही था, 1 के चाइल्ड 2 3 थे, फिर उसके बाद 2 के चाइल्ड 4 5, 3 के चाइल्ड मेरे 6 7 थे, राइट, हो गया बढ़िया। लेकिन यहाँ पे तो मुझे पता है कितनी लेवल्स है, मुझे 2 के चाइल्ड 4 5, 3 के चाइल्ड मेरे, तो लगा कि मैं को लेवल मिल जाएगा, लेवल्स प्रिंट करा सकते हो बिल्कुल, कुछ भी प्रिंट। साथ ही कभी गलती से n इक्वल टू बना रहा है, पर उससे पहले अगर रूट में बस एक केस रूट की वैल्यू, ठीक है, बहुत बढ़िया, इसके आगे एक स्पेस भी दे दो, बहुत सही। अब हर समय मेरे को करना क्या है, प्रिंट, मेरे को और सिंपल हो जाएगा। लो भाई, थर्ड लेवल मैं अपनी, लो भाई कि मेरी कितनी लेवल, तो रिलेशन है ना यार, nth लेवल, यहाँ पे अपना रूट दे दो एंड अपना आई दे दो, बस इक्वल टू हाइट ऑफ रूट प्लस 1, और अपने हाइट फंक्शन को उधार मांग लेते हैं वहां से यार, वैसे तो हमें बार बार आना चाहिए लिखना, लेकिन बहुत ज़्यादा सिंपल था, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने हाइट फंक्शन, यहाँ पे लिख लेते हैं, काम आ रहा है, क्योंकि देखो ये लो खत्म, हाइट ऑफ रूट प्लस 1, और दिक्कत आ रही है पब्लिक स्टैटिक इंट हाइट, अच्छा अच्छा, ये देखो ये दिक्कत आ रही है ना यार, और तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही, नहीं ना, बढ़िया, बस अब देखना सेम कोड चलेगा, ये हर चीज़ के लिए चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, अगर आपको अलग अलग लाइन में प्रिंट कराना है, लो भाई, लो भाई, ये भी आपको बार बार नहीं देना पड़ेगा, खत्म भाई, ये देखो ट्री प्रिंट हो गया, तो ये भी मेरी We will do this approach later on. Let's solve the next problem. It is done by using brute force. Need to learn the better approach. Using Q. Check if two trees are identical. Find maximum element in binary tree. Okay, we had done this problem, maximum element in binary tree, but let's do this one first. Check if two trees are identical. Same tree और आइडेंटिकल, लीड कोड पे कर लेते हैं क्योंकि एक भी क्वेश्चन नहीं किया आई गेस उस पर. इट इज़ एन इजी प्रॉब्लम ऑफ ट्री. Given the root of two binary tree p and q, write a function to check if the are same or not. Two binary trees are considered the same if they are structurally identical and the nodes have the same nodes. Okay. How can we do that? The number of nodes in both the trees is in the range 0 to 100. One two one 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 two.
What's wrong in this? The left node is null, but in this, the left node is 2. So the root node and the left node, it is root node and the right node. Here it has left node is equals to 2, right node is equals to 1, and in this tree it is opposite. Okay, Greeny B, thank you. I was confused that why it is saying that this is false. That means these two trees are not identical, but these two trees are identical. What is the difference? यहाँ पे लेफ्ट ट्री और राइट मतलब लेफ्ट नोड और राइट नोड ही स्वैप हुआ है थोड़ा. यहाँ पे भी लेफ्ट नोड और राइट नोड स्वैप हुआ है. इसको फॉल्स बताया है बट इसको ट्रू बताया है. व्हाट इज द रीजन? हाँ मतलब कि ये दोनों ट्री आइडेंटिकल और सेम कैसे हैं? ओ सेम ही तो है. सॉरी 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 सॉरी. कहाँ ध्यान है मेरा? मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है. ओके, वी नीड टू ट्रेवर्स एट द सेम टाइम. हाउ डू आई डू दैट? First, we will check if P base case will be P and Q is equals to. Yes, I was thinking that it is the mirror image of the first tree, but it was not the case. ध्यान से नहीं देखा मैंने. And how do I iterate both the trees at the same time? Is same tree while mm, P is equal to, sorry, P is not, नहीं P equals to होगा, P equals to Q, and what we will do, we will update P is equals to, नहीं यहाँ तो recursion से choose anyone. You're guessing choose anyone. Have you studied tree data structures already and solved the problems? First, we need to check if the current node is null. Not the current node, but the root node is null. अगर दोनों का root node null है वो तो फिर true होगा. Then we can return true. If only one is true, then it is false. And if the root data is same,
Okay, so there will be two base cases. If P is equals to null and Q is equals to null, if this is true, we will return true. That means the root node of both the trees are 0 or null. That means both the trees are empty. And then we will check if P is equals to null or Q is equals to null. That means any one of the two trees are empty. Then we will return false. Okay. After that, what we can do, we need to check if the data is also same. So we will return we will return p dot क्या value is equals to q dot value and is same tree for p dot left comma q dot left and is same tree कैपिटल T होगा यहाँ तो and p dot right comma q dot right. अभी ये सही है क्या? Are you watching Dreamy B? What's your name by the way? Madhumakhi. Madhu. Hmm, it should be correct. Let's run it. Yes, it is working. बड़ा अच्छा लग रहा है अब क्वेश्चंस बन रहे हैं तो अरे वाह ये देख के तो बड़ा अच्छा लगता है बीट्स 100% ऑफ द सॉल्यूशन बट ये तो कितना ऑब्वियस सा था मैं फंबल ना करने की वजह से धीमे बोल रहा हूँ और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास Is the screen visible? VS Code wali? Yes, it is. Copy it. Two trees are identical. We have solved it. Find maximum element in binary tree. ये तो सुबह किया हुआ था. Find the maximum in binary tree. Find maximum in binary tree. By the way, where are you from, Dreamy B? Are you also in your final year or you're in second year, third year? What do you do? Maximum binary tree, maximum or minimum in binary tree. You are given an integer array nums with no duplicates. A maximum binary tree can be built. Okay, this is something else. Our question is to find maximum. So this is on GFG. Given a binary tree, the maximum or minimum element in it, for example, ये तो solution है, solution ही problem चाहिए. Given a binary tree, find maximum and minimum element. ये solve किया था आज सुबह ही. So let's count it as done. What I did, if root is equals to null, we will return 0. GTG on campus.
One room beside your class. Which class? You're मतलब सेम बैच से हो आप? CSE LNCTS. Nice. I did not know that. My batchmates also watch my streams, except my friends. ओके, इसको नहीं करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं व्हाट आई डिड. लेफ्ट रिजल्ट को स्टोर किया वेरिएबल में, and we are finding the maximum and we are storing it in the result variable. If the result left value is greater than result, we are updating result. And हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि we are having three variables, left, right and the current. Okay, so that is why we are using multiple conditions. Okay, and we are returning result. एक बार पूरा करेंगे खुद से. Let's see, मुझे याद है भी या नहीं. Find min. ये दोनों कोड्स लिखे हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा. सो व्हाट इट हैड इफ बे मतलब मैं दोबारा लिख रहा हूँ. रूट node is equals to null, we will return 0 and we will create a variable result or call it whatever, max, let's call it max, is equals to 0 and int lmax is equals to find max of root dot left. Okay, and int rmax is equals to find max of root dot right. Okay, and what we were returning, yes bro, I got an offer but I'm not happy with it. Ayush, and what about you? Do you have any offer for me? Paid paid internship or something like a remote internship? Hmm, क्या कर रहा था मैं? We have Lmax, we have Rmax, and we are checking if uh, Lmax is greater than max, then we update max with Lmax. Okay, and then if Rmax is still greater than max, we will update max with Rmax. Okay, then we will return the max. Your campus has good opportunities, I think so. Bro, I got into Capgemini, and you are right. My campus is providing a good opportunities, but still it's so unpredictable. Sometimes you get good opportunities, yet miss it, even when you have performed really well. I feel bad for those of my friends who have been working really hard since first years, मतलब first year, and they were scoring CGPA like 8 pointer, 9 pointer, and still they are not getting shortlisted or getting any offer. And I know that they deserves it, but I don't know, luck maybe. That is why I feel grateful that at least I have one offer, but I still want to work harder for better opportunities if I can in the remaining time. It it's okay. Like, I'm not saying that someone undeserving is getting a job, but most of the deserving people are still
waiting for their first offer. So that is something not good in the market. Although they are not asking some exceptional concepts कि तुम्हें बहुत कुछ आना चाहिए तब जाके तुम shortlist होगे या job मिलेगी तुम्हें, but it is weird. Some people are getting jobs without even knowing how to write basic for loops, and some are not even getting placed even when they know stack, queue, linked list, and tree data structures. Hmm. But it's okay. We can't do anything about it. Int main is equals to, यहाँ पे एक चीज अपडेट करनी है, max is equals to integer dot min underscore value, and here the min will be integer dot max underscore value, and then we will repeat the same thing. L min is equals to find min of root है ना, root dot left, and int r min is equals to find min of root dot right. Okay, and then if min is, sorry, L min is less than min, then we will update minimum with the left minimum or the minimum from the left subtree, and similarly we will do if r, yes bro, hoping like anything better than the current opportunity that I have, like the current offer I have, anything better than that. If I get a remote job in a company which is close to my hometown, that must be better. But I'm ready for anything because I have time. अभी पूरा 8th सेमेस्टर बाकी है, तो I don't want to be relaxed कि यार अब तो जॉब लग गई है, अब क्या करना है पढ़ाई करके. ऐसा नहीं करना है बस. एंड और अभी ये जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके मुझे थोड़ा ऐसा फील हुआ कि अगर मैं 1 महीने 2 महीने कोडिंग कर पा रहा हूँ, तो आई कैन डू मच मोर देन दिस. और मैं बहुत टाइम से प्रोक्रास्टिनेट कर रहा था कि यार कोडिंग करूँगा करूँगा डीएसए करूँगा करूँगा, बट नहीं कर पाता था. आफ्टर स्टार्टिंग आउट आई फील कि इट्स पॉसिबल, इतना इम्पॉसिबल नहीं है. डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना, कोडिंग करना, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना. तो अगर मैं ऐसे ही कंसिस्टेंटली अगर 4-5 महीने और थोड़ा अपस्किल कर पाता हूँ खुद को, तो मे बी वी विल बी हैविंग अ ड्रीम पैकेज और ड्रीम कंपनी. और मैं बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ना बात करते करते. रिटर्न में इन 45 days ऑफ कोड चैलेंज आई कुड डू 50% ऑफ द क्वेश्चंस ओनली. और मैं करना चाहता हूँ, मैंने उसे अपडेट करके 100 days कर दिया है, बट राइट नाउ मतलब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये भी होंगे ना स्ट्राइवर की शीट में. लॉग इन. व्हाई आई गॉट लॉग्ड आउट. मेरा अपडेट लॉस्ट हो गया पूरा. अपडेट नहीं मतलब प्रोग्रेस. आई विल लॉग इन अगेन. वी हैड डन अराउंड sliding window 10 step I had. Okay, welcome back sir, how are you? Got the time to study? Jane G. So these are the 4 or 5 topics remaining: dynamic programming, graph, binary search tree, binary trees, greedy algorithm, and heap. So these are 6-7 topics, and we are learning tree traversal. तो इसका ये वाला part तो we can say हो गया. Let me just log into it and update our progress.
Okay, logged in successfully. This is the progress. I have solved 245 out of 455 problems. It is still good, better than nothing. So I have completed 54% of the sheet in 45 days. And now we are learning three data structures. So representation traversals तो पढ़ लिया, प्री ऑर्डर भी समझ आ गया, इन ऑर्डर भी समझ आ गया, पोस्ट ऑर्डर भी समझ आ गया, लेवल ऑर्डर में थोड़ा कंफ्यूजन है. But let's solve this problem on lead code as well. For consistency, ये lead code पे नहीं किया ना. List integer ये कहाँ से आया? Okay, we need to return the list. Given the root of a binary tree, return the pre-order traversal of its nodes values. New array list answer. So what we will do, we will check if the root node is equals to null. We will return nothing. But every time it will return a list, and how we will append to it. ये लीड कोड वाला क्वेश्चन थोड़ा और कंफ्यूज कर देते हैं. Let's say we are calling the same method pre-order traversal for the left subtree. It will return a linked list named answer. And how can we add it to our final answer? ये तो मुझे आता ही नहीं है. ट्राई करते हैं. We will return it and then we will call the same order recursively traversal re can we merge two linked list? Linked list नहीं, list है सिर्फ, array list. Yes, you can merge to array list in Java using several methods. Common approach is to use from collection interface. If you have to array list, name list 1 list 2, calling list 1 dot add all will merge list 2. Okay. List 2 list 1 dot add all list 2. Okay, there is a problem. Is it visible? Yes, it is. So what we will do, we will create another list of integer left is equals to new array list, but it will create multiple lists, and left is equals to pre-order traversal for root dot left and right will be equals to pre-order traversal of root dot right, and we will return the value of the current node into the answer list. So it will be answer dot add, इसको पहले ही कर देंगे, not at the end but in the beginning. Answer dot add, इसके बाद answer dot add root dot data. Data or value? What is the implementation? Value.
root dot value. Okay, and at the end we will return. Okay, इसके बाद में we need to do one more thing. Answer dot add all left comma right. ये वर्क करेगा क्या? कहाँ था? join to array list. Can we add 3 array lists also? Can we append to array list to answer list in Java? And how to do that? Oh, we have 888 subscribers now. AB and answer is equals to new append first list. Okay, one by one we can do that. So what we will do, we will append the first ones left and then answer dot add all right. Okay, and then we will return answer. Let's run. यहाँ पे return answer. कुछ मिस कर दिया क्या? TLE आएगा. या मेरा नेट नहीं चल रहा है? Right is equals to pre-order traversal root dot right. Okay, I had not created the list. List integer. Hey Vamsavardhan, welcome. How are you, buddy? DSS start कर दिया या नहीं? Okay, let's go. Okay, so we did it correctly. I'm liking it 100%. Pre-order is done. In order करते हैं. One footing problems. Yeah, buddy started and now only my new project completed now. I'm posting. So okay. You're posting it on LinkedIn or also doing this learn in public kind of thing? Uh, we have done post pre-order traversal. Okay, here is the link to the problem now. It is the same binary tree. Post order traversal. In order. Sorry.
what we can do in this, first we will check if the कहाँ से क्वेश्चन लगा रहा है। क्वेश्चन तो मैं लगा रहा हूँ ड्राइवर ए टू जेड शीट के, अभी मतलब बाइनरी ट्रीज के कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहा हूँ जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आता था, अभी तो मैं वही क्वेश्चंस कर रहा हूँ। शेखर इज माय बडी। एलटीआई में नाम आया या नहीं शेखर? तेरा था ना इंटरव्यू या नहीं था? और उसके अलावा ये एक शीट जनरेट कराई है कोपायलट से, ये रहे। तो कुछ कुछ एडवांस्ड प्रॉब्लम्स हैं जो करूँगा मैं, बट अभी स्ट्राइवर की शीट पे आ गया मैं वापस। ट्री डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ट्रेवर्सल्स करते हैं, इन ऑर्डर पे हूँ अभी मैं। लेट्स गो। वी नीड टू रिटर्न अ लिस्ट with in order traversal. It is same what we will do if root. Okay, first we will create an list. Integer answer is equals to new. Okay buddy, we'll wait for you to join. Vamsa version, all the best. And list integer answer is equals to new array list, and then if root is equals to null, we will return answer. And then what we need to do, we need to do in order proposal. So we will create a new list integer left is equals to new array list, and then list integer right, spelling गलत है क्या? नहीं, right is equals to new array list, and for in order, first we will print the left subtree, then the root node, then the right subtree. ऐसा ही होता है ना इन ऑर्डर ट्रावर्सल में। क्वेश्चन में देखते हैं पहले what we need to return. If this is the given tree, it will print the root node, then the नहीं, it will print the first it will print the left subtree. So there is no left subtree, so it will print the root, then right, then left. Now in this tree, it should print first left ka left, that is fourth, then the root node, then right वाले का left. So 4 2 6 5 7, then get back to 1. Okay, so we will create left, we will right, and left is equals to in order traversal of root dot left. Okay, then we will update answer dot add all left, and then we will add answer dot add root dot value, and then we will add right is equals to in order traversal root dot right, and then we will add a root or answer.
add all right. So the right list will be added, appended into the answer list. Mm, and it is the correct implementation. And the main thing that we need to add the root dot data into our answer list. So answer list is here. If it is not null, we will append answer dot add root dot value. This is how it will be done. Let's run it. रूट को मैं गलत बोल रहा हूँ या मेरी आवाज़ ही गलत निकल रही है? यहाँ पे रिटर्न आंसर भी तो करना पड़ेगा. रिटर्न आंसर. लेट्स रन इट. एक टेस्ट केस पास हुआ, नल आना चाहिए. अच्छा, इनपुट था 1 null 2 3 and I am returning 1 2 3 unnecessarily. तो यहीं पर रहेगा आंसर डॉट एड रूट डॉट वैल्यू. यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा. प्री ऑर्डर के लिए था वो. Now it is working and submitted. Another easy problem. Done and dusted. Let's go. पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल इन ऑर्डर हो गया, प्री ऑर्डर हो गया, पोस्ट ऑर्डर भी सेम ही होगा. सो इट इज डन. लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल spiral form. Iterative pre-order traversal of binary tree, iterative in-order traversal, post-order traversal of binary tree using two stack, using one stack, pre-order, in-order, and post-order traversal in one traversal. And what are the medium problems? Height of a binary tree, ये तो कर दिया हमने. Check if the binary tree is height balanced, ये नहीं किया. Diameter of binary tree, ये नहीं किया. Maximum path sum, check if two trees are identical or not, ये कर दिया है already. Zigzag traversal of binary tree, ये नहीं किया. Boundary traversal of a binary tree, ये भी नहीं किया. Vertical order, top view of binary tree, bottom view of binary tree, right left view, symmetric binary tree, ये आज ही कर देंगे. आई थिंक मुझे इजी लग रहा है अब ट्री ट्रेवर्सल. एंड हार्ड प्रॉब्लम्स वी विल ट्राई टुमारो. आज मतलब सारे सारे हार्ड प्रॉब्लम्स करना ज़रूरी तो नहीं है, बट मॉरिस प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री, मॉरिस इन ऑर्डर. ये कंप्लीट करते हैं आज. ट्रेवर्सल लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल. break your limits. Okay, we are back. Sorry, I was just checking out something. Let's do this level order traversal and how we can do it on lead code. GFJ पे तो कर ही दिया था. एंड कोडोलियो ओपन करते हैं for better progress tracking. Codecules profile.
update my profile. We have solved around 250 problems in 97 days. 267 problems now. And it has not updated our lead code hacker and now tree data structures क्यों नहीं दिख रहा? अच्छा ठीक है, show more. Tries heap map java collection prime number prefix sum. Tree data structure कहाँ है? 7 problems are done in tree data structures. Okay. Tree level order traversal. Given the root of a binary tree, return the level order traversal of its node's value from left to right level by level. So if this is 3 920 and null 15 7, so we will return 3 then 9 comma 20 then 15 comma 7. If root is equals to null, we will return empty list or what? I will be back in a minute. पानी लेके आता हूँ, मुझे पानी पीना है, गला सूख रहा है मेरा. अंकल जी पानी पिला दो. क्या घटिया जोक याद है मुझे. Where's my webcam? I need to turn it off. Hey guys, I'm back. Let me turn on my webcam and I am just updating some tags in the description, so wait a minute. And here are the tags.
Infosys. Now we are good to go. Let's get back to the question. So what we need to do, we need to traverse the tree level by level, and we need to return list of lists. So first we will create a list of integers. Answer is equals to new array list need to do one thing. Analytics and we are back again after losing the interaction and engagement. Okay, what I was doing, we have created an final answer array list of lists, and if root is equals to null, what we will do, return answer, and then on each level how do we traverse level by level. We need to do that iteratively. First we go on to the root node, and then insert its left node and right node. It can be done using queue only, and queue data structure, let's search for it. Level order traversal binary tree. Hmm, who can explain us
The video is here. Hey, what's up guys, Anush here and welcome to DSE 1 course। और आज की वीडियो में बाइनरी ट्री के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं which is called level order traversal in a binary tree। ये काफी बार इंटरव्यूज के अंदर आया हुआ है। सिमिलरली इसलिए देखते हैं। तो ये हमारे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल्स हैं। अब इसको हम करने वाले हैं। क्वेश्चन को जरा सोचो किस तरीके से आप लोग इसे इंप्लीमेंट कर रहे होगे। अगेन रिकर्सिवली सोचना है। सोचिए किस तरीके से आप लोग सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहे होगे और कैसे इसको आप लोग सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट, उसके बाद हम देख रहे होंगे कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक अप्रोच ये हो सकती है कि हमें लेवल बाय लेवल प्रिंट करना है, राइट। तो ऐसा करते हैं, एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो कि किसी भी गिवन लेवल को प्रिंट कर सकता है। उसके बाद आप लोग एक फॉर लूप चलाना है और उसके अंदर ये फंक्शन कॉल कर देना है और एक एक करके आप लेवल बढ़ाते रहो, तो वो एक एक करके सारे सारे लेवल्स प्रिंट करता रहेगा। क्या करना चाहता हूं मैं, एक मैंने फंक्शन बनाया जिसका काम है कि किसी भी करंट लेवल को जाकर प्रिंट कर दो। सपोज करो मैंने इसको बोल दिया कि लेवल नंबर 3 प्रिंट कर दो, ठीक है। सपोज करो ये 1 2 और ये लेवल 3 है, तो मैं इसको बोलूंगा लेवल नंबर 3 प्रिंट करने के लिए, तो ये फंक्शन अपना काम करेगा और अपना लेवल 3 प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो मुझे बस करना क्या है, एक फॉर लूप के अंदर ये वाला फंक्शन कॉल कराना है। कितनी देर तक कराना है कि जितनी इसकी हाइट रहने वाली है। तो फॉर आई इन 1 से लेकर हाइट ऑफ दिस ट्री बेसिकली, तब तक मुझे ये वाला फंक्शन कॉल कराना है। तो ये फंक्शन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। बेसिकली एक मैंने फॉर लूप बनाया जो कि 1 से लेकर हाइट ऑफ ट्री तक चल रहा है। और हाइट ऑफ ट्री कैसे निकालना है हमें ऑलरेडी पता है, हमने देखा था कैसे आपको बाइनरी ट्री की हाइट निकालनी तो निकाल सकते हो। उसी में वीडियो लिंक अटैच कर दूंगा, जाके चेक कर सकते हो। और उतने टाइम मैंने इस फंक्शन कॉल करा दिया प्रिंट करंट लेवल को और हर बार एक लेवल पास कर दिया। तो पहली बार में ये करंट लेवल 1 प्रिंट करेगा, उसके बाद लेवल 2, उसके बाद लेवल 3, इस तरीके से ये सारे सारे लेवल प्रिंट कर देगा। बट अगर इसके आप लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो इसकी आएगी बिग ऑफ n स्क्वायर। वर्स्ट केस के अंदर अगर सपोज करो आपका ट्री कुछ ऐसा स्क्यू ट्री है, ठीक है, जिसके अंदर सारी सारी बस लेफ्ट 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 चिल्ड्रन है, तो उस केस में ये बिग ऑफ n स्क्वायर जाएगी इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इससे हम ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे, लेकिन एक बार जब समझते हैं कैसे काम कर रहा है ये। तो अगेन इसके अंदर भी वो यार सब ट्री वाला कंसेप्ट है, ठीक है। तो आप लोग करना है क्या, अगर आप लोगों को किसी भी लेवल को प्रिंट करना है, सपोज करो लेवल नंबर 3 प्रिंट कराना है, तो क्या क्या बेस केसेस होंगे पहले वो सोचो। तो बेस केसेस कब हिट होंगे, जब आपका रूटीन है। अगर आपका रूटीन है तो आपको कुछ प्रिंट कराने की जरूरत ही नहीं है, तो आप वहीं से वहीं रिटर्न कर जाओगे, राइट। उसके बाद अगर आपका लेवल 1 है, लेवल 1 का मतलब ये समझो कि अगर आपको मैंने बोला था कि यही वाली रूट वाली लेवल को ही प्रिंट करना है, तो आपको क्या करना था, तो आपको बोलना था कि ठीक है भैया मैं इसका डेटा प्रिंट कर देता हूं क्योंकि यही लेवल मुझे प्रिंट करना है। तो ये भी एक तरीके से बेस केस ही हो गया। लेकिन अगर लेवल ग्रेटर देन 1 है, तब क्या करना है, अगर लेवल ग्रेटर देन 1 है तो मुझे नीचे तक चलते जाना है और क्या करना है, बेसिकली लेफ्ट साइड आऊंगा, राइट साइड आऊंगा और एक लेवल -1 कर दूंगा, ठीक है। सपोज करो मेरा लेवल 3 था और मैं यहां पहुंचा, तो क्या मेरा लेवल 1 के बराबर है, नहीं लेवल 1 के बराबर नहीं है। क्या मेरा लेवल 1 से बड़ा है, तो हां लेवल मेरा अभी फिलहाल 3 चल रहा है, ठीक है। इस फंक्शन कॉल में मेरा लेवल अभी 3 चल रहा है, तो मैं एक लेफ्ट साइड आऊंगा और लेवल -1 कर दूंगा, तो 3 से हो जाएगा मेरा ये 2 जाएंगे। उसके बाद पीछे जाएंगे, उसके बाद यहां से राइट के लिए कॉल करा जाएगा। उसके बाद राइट के लिए कॉल करोगे तो यहाँ पर आपका लेवल था 3, यहाँ पर आपका लेवल हो जाएगा 2। इससे बेटर हम इसे कर सकते हैं और हम यहाँ पे यूज करेंगे क्यू डेटा स्ट्रक्चर का, ठीक है। क्यू लेवल और ट्रैवर्सल प्रिंट हो जाता है, वो भी बिग ऑफ एन के अंदर। तो क्यू के अंदर 5 डल चुका है। उसके बाद करना क्या है, एक एलिमेंट निकालो इसमें से। हमने निकाला 5 क्योंकि 5 ही है इसके अंदर टॉप पे। 5 निकला, 5 को हमने करा दिया प्रिंट। उसके बाद 5 के जो लेफ्ट और राइट चाइल्ड है उनको एक एक करके डाल दो। तो 5 का लेफ्ट है 1, लेफ्ट डाल दिया। उसके बाद 5 का राइट है 7, 7 डाल दिया। क्यू के अंदर अब 2 एलिमेंट है, 5 निकल चुका है। उसके बाद अगेन क्यू में से एक एलिमेंट को पॉप करना है। ये तब तक करना है जब तक कि क्यू आपकी खत्म नहीं होती, एम्प्टी नहीं आती। तो हमने निकाला इसमें से 1, 1 हमने यहाँ पे डेटा नहीं डालना। एक और चीज, यहाँ पर जो क्यू है ये क्यू ऑफ नोड है, ठीक है। ये क्यू ऑफ नोड रहने वाली है, इसलिए हमारे पास जब भी हम क्यू में से एलिमेंट निकालेंगे तो हमें नोड मिलेगी और नोड के पास लेफ्ट और राइट तो होता ही है। तो हमने निकाली 1 नोड, ठीक है। तो ये 1 नोड यहाँ से निकल गई क्यू में से। और उसके बाद इसका जो लेफ्ट हमने प्रिंट करा दी, पहले तो इसका डेटा प्रिंट करा दिया। उसका जो लेफ्ट है इसका वो है 2, वो हमने क्यू में डाल दिया। उसके बाद इसका जो राइट है 4, वो भी हमने क्यू में डाल दिया। तो अब हमारी क्यू ये हो चुकी है और हमारे पास एलिमेंट ये है जो हमने प्रिंट करा दिए। उसके बाद अगला एलिमेंट निकालते हैं विच इज 7। क्यू में से 7 निकालेंगे, 7 करेंगे प्रिंट। 7 के लेफ्ट और राइट को डाल देंगे क्यू में, तो 7 का लेफ्ट भी कुछ नहीं, राइट भी कुछ नहीं, तो क्यू में कुछ भी नहीं डलेगा। अगेन क्यू में से एलिमेंट बाहर निकालते हैं, तो 2 को हमने बाहर निकाला। 2 का लेफ्ट और राइट को डाल देते हैं क्यू में, तो क्यू का कोई भी लेफ्ट भी नहीं, क्यू का कोई राइट भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं डलेगा क्यू में। अगेन एलिमेंट निकालते हैं क्यू से बाहर, तो क्यू के से हमने बाहर निकाला 4 और 4 को हमने करा दिया प्रिंट। 4 के लेफ्ट और राइट को क्यू में डाल देते हैं, तो पहले हमने डाला 3 को, उसके बाद हमने डाला 6 को, ठीक है। उसके बाद हम इस क्यू में से 3 को बाहर निकालेंगे। 3 के लेफ्ट और राइट को डालेंगे, 3 का लेफ्ट और राइट कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगेन हम 6 को बाहर निकालेंगे, 6 का लेफ्ट और राइट डालेंगे, 6 का लेफ्ट और राइट कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पर अगेन हाँ 3 और 6 को प्रिंट भी तो कराना है, 5 1 7 2 4 3 6। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल प्रिंट होता है, आप लोगों को दिख रहा होगा। अब जैसे कोड देख लेते हैं, कोड देखने के बाद आप लोगों को और अच्छे समझ में आएगा। इसके बाद एक और चीज देखेंगे कि हमने यहाँ पर एक ही लाइन में प्रिंट कर दिया, राइट। अगर क्वेश्चन ये होता कि आपको लाइन बाय लाइन प्रिंट करना है, मतलब पहली लाइन में प्रिंट करना है 5, उसके बाद अगली लाइन में प्रिंट करना है 1 एंड 7, देन 2 एंड 4 एंड देन आपको 3 एंड 6 प्रिंट करना है, तो ये आप कैसे अचीव कर सकते हो वो भी हम देख रहे होंगे इसके बाद, ठीक है। तो पहले जरा ये वाला कोड देखते हैं, उसके बाद इसका कोड देख रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पर सेम चीज कोड कर दिया, जरा समझते हैं कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले हमने क्यू बनाई है, क्यू इक्वल्स टू न्यू लिंक लिस्ट। तो इस तरीके से हमारी क्यू बन रही होती है, आप लोगों को पता होगा किस तरीके से क्यू बनती है, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। उसके बाद हमने क्यू के अंदर डाल दिया है रूट को, हमारी करंट रूट है 5, तो हमने 5 डाल दिया क्यू के अंदर। उसके बाद ये लूप चलेगा जब तक कि क्यू हमारी खत्म नहीं होती, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होती, तब तक हम क्या करेंगे, करंट नोड निकालेंगे। तो करंट नोड है हमारी, तो हमने 5 डाला था क्यू के अंदर, राइट। तो हमारी करंट नोड है 5। तो इस तरीके से समझ लो कि हमने पहले 5 को डाला, उसके बाद हमने करंट इक्वल्स टू क्यू डॉट पोल, देखते हैं ये निकल चुकी है बाहर और हमने करंट के अंदर हमारा 5 है, ये वाली नोड है। उसके बाद हम करंट नोड को प्रिंट कर देंगे, तो यहाँ पर हमने करंट नोड कर दी प्रिंट। उसके बाद करंट का लेफ्ट अगर नल नहीं है तो करंट के लेफ्ट को डाल दो। करंट का लेफ्ट 1 है विच इज नॉट नल, तो करंट के लेफ्ट को डाल दो क्यू के अंदर, तो हमने 1 को डाल दिया। उसके बाद करंट का राइट भी नल नहीं है तो करंट के राइट को भी डाल दो, 7 7 को भी डाल दिया। उसके बाद हम अगेन लूप में चलेंगे, तो क्या क्यू हमारी एम्प्टी है, तो क्यू हमारी एम्प्टी नहीं, क्यू के अंदर 2 एलिमेंट है। तो अगेन करंट एलिमेंट होगा ये 1, राइट। तो करंट एलिमेंट हो जाएगा 1। क्या 1 का लेफ्ट नल है, 1 का लेफ्ट नल नहीं है तो 1 के लेफ्ट को डाल दो क्यू के अंदर, तो 2 है, 2 को डाल दो। उसके बाद 1 का राइट नल है, नहीं 1 का राइट भी नल नहीं है तो 4 को भी डाल दो क्यू के अंदर, ठीक है। उसके बाद 1 को प्रिंट भी करना जरूरी है, ठीक है, प्रिंट करना मत भूलना। तो 5 के बाद हमने 1 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद अगेन लूप में अंदर जाएंगे, क्या क्यू एम्प्टी है, क्यू एम्प्टी नहीं है, तो क्यू के अंदर से पहले करंट को बाहर निकालो, वो करंट में आ जाएगा। तो 7 हो गया हमारा करंट और 7 को हम कर देंगे यहाँ पे प्रिंट। फिर 7 का लेफ्ट देखो, क्या 7 का लेफ्ट है, तो 7 का लेफ्ट नल है, तो इसलिए हम इसको नहीं डालेंगे क्यू के अंदर। सिमिलरली 7 का राइट भी नल है तो उसको भी हम क्यू में नहीं डालेंगे। अगेन अपने वाइल लूप में जाएंगे और करंट इक्वल्स टू क्यू डॉट पोल, तो क्यू है हमारी ये और क्यू डॉट पोल करेंगे तो 2 हमें मिल जाएगा यहाँ पे।
उस 2 को हम करा देंगे प्रिंट। तो 2 का लेफ्ट नल है तो इसे क्यू में नहीं डालेंगे, और 2 का राइट भी नल है तो क्यू में नहीं डालेंगे, और क्यू हमारे यहाँ पर अभी भी एम्प्टी नहीं है, तो करंट इक्वल टू क्यू डॉट 4 हो जाएगा। क्यू में से 4 बाहर निकलेगा और ये हो जाएगा इस तरीके से। क्यू का डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा? क्यू नोड, क्यू ऑफ क्वी node q is equals to new linked list. Okay, and what we will do, we will insert the root node into the queue and then run a while loop to check. So the left and the right child. और उसके बाद करंट को हमने प्रिंट कर दिया। करंट का We will create a queue node linked list q dot add root offer your add पार्ट एक किया, so we will add root and then we will run while loop while the queue is empty, not empty. Then we will create a current node and insert the root into it, and then current dot data को हम insert कर देंगे linked list में, और that is the queue में insert करेंगे, and then we will check if the left is not null. If it is not null, we will add the left child into the queue and then right child. Okay, and then it will run again the while loop. So q dot offer root node, and while not q dot is empty, we will create a node tree node current or level is equals to q dot poll. Okay, तो सही है. ये हमारी lag of first level and size is equals to q dot size and then we will create a list of integers for this level
which will store all the childs of the current root node, and the current tree is binary tree now. So ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है. We will simply add left child and right child. लेफ्ट नल है तो करंट का लेफ्ट नल नहीं है, तो हमने हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूशन खत्म. क्यू में जब एलिमेंट डाल उसके बाद एक नल भी डाल दो, तो हम यहाँ पर नल जानबूझ के डाल रहे हैं. ठीक है, मैं एक नए पेन से डालता हूँ. ठीक है, तो आपने जब क्यू के अंदर नल भी डाल दिया, तो अब आपकी क्यू के अंदर क्या है, पहले 5 है, उसके बाद एक नल है, राइट. उसके बाद क्या क्यू हमारी एम्प्टी नहीं है. करंट इक्वल्स टू क्यू डॉट पोल. अब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि करंट जो है वो कभी कभी नल भी हो सकता है, राइट. तो यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा. इस लाइन के बाद हम यहाँ पर कुछ कोड लिख देते हैं. मैं यहाँ पर वो कोड लिख देता हूँ. तो बेसिकली यहाँ पर मैंने एक नल चेक लगा देगा और हमने 5 को कर दिया प्रिंट. उसके बाद करंट का लेफ्ट नॉट नल है, तो लेफ्ट So before free. So what are you waiting for? Please make sure you check out the links in the description. Hey everyone, welcome back to the channel. Tree that you are seeing over here, right? So in order to print these are the initial data structures that I'll be taking. Okay, now let's start iterating over this queue. So what's the first thing that I have? I have a node which is 1. So let's BFS, breadth first search. पूरे के पूरे लेफ्ट सब ट्री के डेटा को इस तरीके से अपने सीक्वेंस के अंदर स्टोर करा दिया है. रूट हमारे पास ऑलरेडी थी. अब हम जाएंगे अपने राइट सब ट्री की तरफ. राइट सब ट्री में जाएंगे तो यहाँ पर 3 हमारी रूट बन जाएगी. तो हम 3 के डेटा को सबसे पहले लिख देंगे. उसके बाद 3 का लेफ्ट सब ट्री विच इज नल, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा. उसके बाद 3 का राइट सब ट्री विच इज ऑल्सो नल, तो यहाँ पर भी हमारे पास -1 आ जाएगा. तो इस पूरे के पूरे बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करने उसके बाद सेकंड लेवल पर जो नोड्स हैं हम उन्हें प्रिंट करवाएंगे. फिर हमारे थर्ड लेवल पर होते हैं उन्हें डीएफ वैल्यू, ब्रेथ फर्स्ट सर्च. डीएफएस किसी भी चीज को ट्रैवल करने का, जनरली बाइनरी ट्रीज को या फिर ग्राफ्स को ट्रैवल करने का वो तरीका है जिसके अंदर हम पूरी की पूरी ब्रांच को एक साथ पहले एक्सप्लोर करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पर प्री ऑर्डर रिवर्सल यूज करना होता तो उस केस में सबसे पहले हम लेफ्ट सब ट्री को पूरा का पूरा ट्रैवल करते, फिर यहाँ पर लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा ट्रैवल करते एंड इस तरीके से एक ब्रांच में हम डीप में जाते, डेप्थ में जाते, तो हमारे ट्रिवर्सल का तरीका डिफरेंट होता. जबकि लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल कहता है कि हमारे पास सबसे पहले हम 1 वाली नोड को ट्रैवल करेंगे, फिर 1 के जो सबसे पास है मतलब नेक्स्ट लेवल में नोड्स हैं उनको ट्रैवल करेंगे, फिर 3 के जो सबसे पास है मतलब नेक्स्ट लेवल में नोड्स उनको ट्रैवल करेंगे. तो दिस इज कॉल्ड ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जिसमें हम डिस्टेंस वाइज जो सबसे पास वाली नोड्स है उन सबसे पास वाली नोड्स को पहले ट्रैवल करते हैं, फिर नेक्स्ट लेयर डिस्टेंस वाली नोड्स को ट्रैवल करते हैं, फिर नेक्स्ट लेयर डिस्टेंस वाली नोड्स को. सो दीज आर द 2 मेजर टाइप्स ऑफ ट्रिवर्सल्स जिनको हम सीख रहे होते हैं और इनको डिटेल में जाकर हम ग्राफ में पढ़ेंगे. तो एक तरीके से जब हम अपने प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर ट्रिवर्सल की बात करते हैं तो वो हमारी डीएफएस बेस्ड अप्रोचेस की तरह उनको हम सोच सकते हैं. और जब भी लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल की हम बात करते हैं उसे ब्रेथ फर्स्ट सर्च, बीएफएस अप्रोच की तरह हम सोच सकते हैं. अगर अभी के लिए डीएफएस बीएफएस हमें थोड़ा क्लियर नहीं होना तो कोई घबराने की बात नहीं है. इन कॉन्सेप्ट्स को बाद में उसको ट्रैवल करना और इस हम क्यू के अंदर अपनी होगी एंड क्यू के का वैल्यूज होनी चाहिए. इसी के दोनों एंड कर दें. जब करने पुश गेट वी आर गोइंग टू फॉलो है जो नोड है प्रिंट दैट वैल्यू, जो भी हमारी करंट नोड है उसके डेटा को हम प्रिंट करवा सकते हैं. अगर करंट हम पुश कर देंगे ऑन ऐप नोड से सीधा पड़ेगा. क्यू के अंदर इंटीजर की जगह हम अपने नोड स्टार पॉइंटर्स को ही स्टोर कराना चाहते हैं. इनफैक्ट ऊपर से हम चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं अपने लिए अपनी क्यू को एंड यहाँ पर आ जाते हैं. जैसे ही एलिमेंट को बाहर निकाला उसके दोनों चिल्ड्रन को वहां पर स्टोर करवा दो. 1 का लेफ्ट चाइल्ड है, 2 राइट चाइल्ड है, को करवा पहले बाहर जाएगा और 2 पहले बाहर आया तो 3 जो है उसके बाहर आने से पहले 2 के चिल्ड्रन लाइन. तो अब हो रहा होगा सेकंड आएगी. अब सबसे पहले क्यू के अंदर हमें ऐड कर देना है अपनी रूट नोड को और उसके अलावा एक और चीज ऐड कर देंगे जो है एक नल नोड. अब एक लूप चलाना है. जब तक हमारी क्यू खाली नहीं हो जाती तब तक हम लूप चलाएंगे. वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट इज एम्प्टी. क्यू से एक एलिमेंट को बाहर निकाल लेंगे और इस एलिमेंट को कहेंगे अपना करंट नोड. क्यू डॉट रिमूव कर लेंगे अपनी करंट नोड. सबसे पहले चेक करेंगे कि करंट नोड नल तो नहीं है. अगर करंट नोड हमारी नल है तो उस केस में हम क्या कर रहे होंगे, उस केस में अलग प्रॉपर्टीज चेक करेंगे. नहीं तो लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री को ऐड कर रहे होंगे क्यू के अंदर. अगर करंट नोड के अंदर नल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे
नेक्स्ट लाइन। उसके बाद चेक कर लेंगे कि क्या हमारी क्यू खाली हो गई है, मतलब उसमें लास्ट जो नोड थी वो नल नोड ही थी क्या। अगर ऐसा है कि क्यू खाली ही हो गई है नल निकालने के बाद, तो यहाँ से तो अपना Hey लूप वापस कर Vamsa देंगे। Vardhan, और अगर ऐसा नहीं welcome है कि back. और भी नोड्स हैं क्यू के अंदर, तो वापस से क्यू के अंदर ऐड कर देंगे अपने नल को। और अगर नल नोड नहीं है तो उस केस में प्रिंट कर देंगे अपने नोड के डेटा को, करंट नोड डॉट डेटा को हमने कर दिया प्रिंट। फिर चेक कर लेंगे कि करंट नोड का लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल। अगर नॉट नल है तो उसको क्यू में ऐड कर देंगे, क्यू डॉट ऐड करंट नोड का लेफ्ट। सिमिलर वे में अगर हमारे करंट नोड का राइट इज नॉट इक्वल टू नल, मतलब उसमें कोई नॉट नल डेटा स्टोर है, तो क्यू डॉट ऐड करंट नोड का राइट। एक बार हल्का सा रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्यू बनाई, क्यू के अंदर शुरुआत में रूट नोड को डाल दिया, फिर नल को डाल दिया। उसके बाद एक लूप चलाया जब तक हमारी क्यू एंटी नहीं हो जाती। फिर करंट नोड को निकाला, अगर करंट नोड नल आ जाती है उस केस में नल का मतलब है नेक्स्ट लाइन, तो नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर दी। अगर लास्ट नोड थी हमारी नल नोड, फिर तो ब्रेक कर जाएगी लूप से, यानी सारे नोड्स को हमने प्रिंट करवा दिया लेवल ऑर्डर में। पर So instead of size, we will do grid of a q dot offer root. Then we will add null q dot offer null, and inside the while loop we will. It's okay, Vamsavardhan. No need to say sorry. We will create a new node. Pre-node current is equals to new node So we have removed the root node, and now we need to check if its left subtree is not null, right? If current node is equals to null, then we will do something else. Otherwise, if it is not null, we will check for the left node and add it to the queue. Okay. We'll check if current node is equals to null. Then we will check if q not q dot is empty. If q is not empty, we will add current is empty. If it is empty, we will break. Otherwise, we will add null to the queue. And in this, where we are storing it in our linked list, क्योंकि क्वेश्चन में तो लिंक लिस्ट पूछा है ना, so
ऐसा ना करके we will create int size is equals to q dot size, and then we will create a list of integers named level is equals to new array list, and then we will run a for loop for in I is equals to 0, I less than size, and I plus plus, and then tree node is equals to q dot poll, that is we are creating a new node and inserting the root node into that, and then we will level dot add node dot value. So we will add the value in our list of that particular level. Okay, after that, if node dot left is not equals to null, we will do q dot offer, we will remove node dot left, and similarly if node dot right not equals to null, we will do q dot offer node dot right, and then we will update our answer dot add level, and outside the while loop we will return answer. Hope it works. लीवर लिख दिया लेवल को, और क्या एरर है, 2 errors लेवल, ओके लेवल को लीवर लिख दिया. Finally, level order traversal is also done. It's quite confusing to convert what they are teaching in their videos into actual problems which are being asked in the platform, on the platforms. कितना गलत हूँ मैं. Tree node, we created a queue, we inserted the root node, and then we stored the size, and then we created a list for the level, and we run a for loop, और इसका size ऐसा ना करके, as it is a binary tree, we could simply do left child right child also. So level order traversal is also done. Iterative in order traversal, pre-order, in order, post order traversal of binary tree using 2 stack, 1 stack,
one traversal, ये सब नहीं करते हैं. Let's jump to the medium problems of tree. Check if binary tree is height balanced or not. Diameter of binary tree. ये problem देखते हैं. Check if binary tree is height balanced or not. So a tree is height balanced if it is height balanced, then it should have exactly 0 or 2 childs. Am I right? Height balanced trees intermediate problem. Check if tree is balanced, it is complete, depth of given node, count internal nodes, or find all ancestors of a node. But let me first check balanced. Okay, height difference between left and right subtree of any node is at most 1. Balanced binary tree. So the height difference between the left and right subtree of any node is at most 1. If it is greater than that, it is not a balanced binary tree. So if the screen is visible, tree is complete binary tree, if tree is perfect binary tree, if tree is balanced. Hey Rayuga, welcome back. How are you? Check height of root. If left height is equals to I got it. I was expecting that this month we will be able to complete 1000 subscribers, but we could only do 900. So let's go. If it is balanced, we will return check. First, we will create a helper method. Private int check tree node root, or let's say call it node, and inside that, if node is equals to null, we will return 0, and then we will create int left height
is equals to check node dot left, and if left height is equals to -1, we will return -1, and then we will get in right height is equals to check node dot right, and if right height is also equals to -1, we will return -1. Okay, and then we will check the difference. If math dot a absolute of left height minus right height is greater than 1. So if it is greater than 1, we will return -1. And at the end, we will return the height of the current node to 1 plus math dot max of left height, comma, right height. This is the helper method, and using this, we will do return check node is not equals to -1. If it is equals to -1, that means it is not balanced. Okay, let's run it and see if it works. Compile time error. सॉरी यहाँ पे रूट होगा ना. रिटर्न की स्पेलिंग गलत कर दी. रिटर्न स्टिल राइट में कैपिटल आर कर दिया. इतनी गलतियां. ओके, बट लॉजिक इज करेक्ट. I hope it is correct. So binary tree is height balanced or not, it is done. The next problem is diameter of a binary tree. So diameter क्यों बोल रहा हूँ. Diameter is nothing but the length. Given the root of a binary tree, return the length of the diameter of the tree. The diameter of binary tree is the length of the longest path between any two nodes in a tree. This path may or may not pass through the root. The length. Okay, so diameter 4 से लेके 3 तक का डिस्टेंस हो जाएगा. 1, 2 and 3, है ना. Okay, so the longest difference between two nodes in a tree.
फुल स्क्रीन ही रहने देते हैं. Let's get back to the problem diameter of a binary tree. As the problem states, the diameter of a binary tree is the length of the longest path between any two nodes in a tree. This path may or may not pass through the root. The length of a path between two nodes is represented by a number of edges between them. So how do we find the number of edges between two nodes? The longest path that passes through X is so what can be the intuition? We need to find the distance between the nodes which are farthest. Let's say this is the root node. And these are its children. Call it 4, 5, 6, and 7. इतना करने की जरूरत नहीं है. इसका एक राइट चाइल्ड बना देता हूँ, that is 6. So the complete intuition is if we are on this root node, then we can calculate the diameter passing through this root node by calculating the left height of the left subtree and the height of the right subtree and adding it. So it will give the length of this path. Okay, and then we will move to the next node, and then we will calculate the height of its left subtree or the left child to the and the height of the right subtree and add it. It will give the length of its path, and we will update whichever will be the maximum. But
The problem is every time we will be iterating for each node, it will be very expensive in terms of time complexity. So let's create a helper method that will calculate the height. So private in height of node, and if node is equals to null, we will return 0. What messages? Int left height is equals to height of node dot left, and int right height is equals to height of node dot right, and the longest path passing through will be left plus right. Okay, so int through node is equals to left height plus right height. Okay, and and we will update the global answer. Global answer will be in a main method. First we will call the height method with root as the node, and we will we can create this diameter outside the method. Private int diameter meter is equals to 0, so it will be accessible by all the methods. Okay, and we will simply return diameter. And we will check if diameter create कर दिया global variable, and if through node length is greater than diameter, we will update diameter with row node, THROUGH node, and at the end we will return 1 plus math dot max of left height comma right height, and done. And let's run it. Diameter TIMTR diameter क्यों लिख दिया? Diameter, it is just diameter. Okay, it worked, and we are good to go. We are good to move forward, and it was not the best solution, but it was a solution.
So it's okay. We have done the diameter of binary tree. Maximum path sum, इसका मतलब क्या है? हार्ड प्रॉब्लम है, अभी नहीं करते हैं. zigzag traversal करते हैं. क्या करना ज़रूरी है क्या सारा? I need to learn about other things also. Symmetric tree, check balanced tree, left view, right view, ये नहीं किया. Level order traversal कर लिया मैंने. Understand recursion pattern, root left right thinking, ये अभी नहीं किया है, तो we will do that. These 4 problems we will do. Quick revision, most asked array formulas and things like that. And day 3 will was supposed to be binary search tree basics. Insertion, search, min-max, traversal usage. BST, insert, search, understand, Inorder is equals to sorted property. Search in BST, insert in BST. Okay, we need to learn about graphs only, right? So graph is the only topic remaining for us to be prepared. And DP also, यार. दो topics हैं, DP and graph. DP and graph. 3 is about to be done and dusted. Binary tree आज ही करते हैं, खत्म करते हैं आज. Is anyone watching? You guys, what are you guys doing if you are watching consistently? You're not interacting, you're not guiding me if I'm making mistakes, you're not asking anything. What you guys are doing? If you're watching from the beginning. Is there anyone watching me, or you're some bots increasing my watch time only? I want to take a break, or should I solve this problem? Zigzag reversal. It is like a break only. I'm tired. Binary tree zigzag level order traversal. Given the root of binary tree, return the zigzag level order traversal of its nodes value, that is from left to right, then right to left for the next level and alternate between. I think we can continue this same stream tomorrow in the morning with the name of day 3, and in the evening we can do day 4. I'm tired now. नींद आ रही है. और स्ट्रीम को तो बस 2 घंटे हुए हैं ना आज तो. Still, it's good. Better than nothing. Is there anyone on the live chat? If no one is commenting or talking to me, I will end the stream in 3 minutes at 11:50. I'm left with no motivation now. Hey Vamsavardhan, are you there? If no one is commenting, then who is watching?
नहीं करोगे ना? 6 we will create a answer list which will contain the list of all the level order nodes. Oh, we will create a list of integers, name result which will store our answer, new array list. If root is equals to null, we will return result as it is. Okay, and then we create a queue which holds node. Q is equals to new link list. Okay, q dot offer root. Okay, and we will need a boolean. zigzag level order traversal तो हो जाएगा, and we need to return 9 20 then 7 15 ऐसे ही ना, 20 and 9 then 15 and 7. So okay, so we will keep track of the direction with the help of a boolean variable. Boolean reverse is equals to false. ठीक है, then for each level we will keep track of the direction while not q is empty int size is equals to q dot size, and then list of integer level is equals to new array list, and simply do the level order traversal. For and I is equals to 0, I less than size, I plus plus, and pre node is equals to q dot poll and level dot add node value, and if node dot left is not equals to null, we will do q dot offer node dot left, and if node dot right
is not equals to null, we'll do q dot offer node dot write, and now we will check if reverse is true. We will do collections dot reverse level, and then we will add it to our result dot add level, and will update reverse is equals to not reverse. It will flip the direction, and then we will return result. Let's run it. चल गया in the first attempt. And submitted. Hoping there will be no error. Okay, okay, solution. Not good, not bad. Zigzag, but it is easy, but lead code पे तो ये medium mark है. Description medium. मैं easy समझ के आया था सॉल्व करने. Level order traversal. Today we did 8 submissions. Now I am ending the stream. Should I? Or we can complete the tree problems. Maximum path I'm not doing. Boundary traversal of binary tree. Let us do that. Boundary traversal of tree. मैं इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि मैं भूल जाऊंगा इतने सारे प्रॉब्लम्स करने के बाद भी. There are so many hard problems. सारे तो नहीं करने बैठूंगा मैं अभी. I just wanted to have a basic idea on how trees works. So if there is a easy problem of trees, I should be able to solve them. And tomorrow we will learn about binary trees, the concepts, and the practice problems also. And then we will start graph tomorrow itself. BFS, GFS problem, topological sort problem, shortest path algorithm, minimum spanning tree problems, other algorithms as well. In the Strivers sheet, we have completed 254 problems. That's a good achievement. 20 easy problems are remaining. I'm ending the stream. See you tomorrow. If anyone is interested, please join me tomorrow as well. Maybe I will be streaming in the morning as well and in the evening too, because I want to learn. So, bye bye. Good night. See you tomorrow. Take care. And this was it for today. Thank you so much for joining. Let this time up be completed. Till then, we can do one more thing. Type. Let's so showcase some typing skills. First, while last over long help against. Must set here. Give me mini project ideas. You are in second year, right? You can make anything, bro.
What are you learning? Are you into like machine learning or web development? What are you learning right now, or just studying DSA only? You can take help from ChatGPT for the ideas as well as execution without even doing it. Web development. So is there any idea, मतलब ऐसा कोई आइडिया है तुम्हारे दिमाग में जो तुम एक्चुअली एग्जीक्यूट करना चाहते हो? अगर तुम कोई एंटरप्रेन्योर होते या कोई बिजनेसमैन होते तो तुम कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते जो तुम ऑनलाइन ला सकते हो, जैसे ई कॉमर्स जैसा या समथिंग लाइक दैट। अगर उससे रिलेटेड कुछ बना सकते हो तो दैट विल बी द बेस्ट आइडिया। मिनी प्रोजेक्ट में उसका फ्रंट एंड वाला पार्ट अकेला बना देना, और जब मेजर माइनर प्रोजेक्ट बनाने को बोला जाएगा तो उसका बैकएंड बना देना, और जब फुल मेजर प्रोजेक्ट बनाने को बोला जाएगा तो दोनों को इंटीग्रेट कर देना। दैट दैट इज व्हाट आई विल सजेस्ट। इन द मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट द फ्रंट एंड ऑफ योर बेस्ट आइडिया जो भी तुम्हारे दिमाग में आए। अगर तुम बिजनेसमैन होते तो तुम किस बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करते, किस चीज़ से रिलेटेड, उसके आसपास का कोई प्रोजेक्ट बनाओ। मिनी प्रोजेक्ट में उसका फ्रंट एंड बनाना, माइनर प्रोजेक्ट में उसका बैक एंड बनाना, और मेजर प्रोजेक्ट में दोनों को कंबाइन कर देना। और अगर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता है अभी तो मेक इट यूजिंग AI, and over the time learn how AI has implemented all the features and all the tech stack into that one project। okay, ऐसा कभी मत सोचना कि पहले तुम पूरा पढ़ लोगे उसके बाद में खुद से पूरा प्रोजेक्ट बनाओगे। ऐसा कोई नहीं करता है, कभी नहीं होता है। And if you are not appearing in placements, you might not know that they don't really ask in depth about project। if you are like, देखो सबसे बड़ी बात है ना कि when you are appearing for an interview, your first goal is to get your backup plan in any company। तो मोस्ट प्रोबेबली वो ना मास रिक्रूटर कंपनीज होती हैं, और दे डोंट रियली आस्क about your projects। they ask nothing। you just need to get shortlisted with that technical assessment। जो पहला असेसमेंट होता है वो DSA हैवी होता है। तो you should be sharp with your DSA skills, problem solving skills। क्या हो रहा है? Okay, I'm going। Thank you so much for joining everybody who has joined। This was it for today। See you tomorrow। And if you are also appearing for placements, do check out my YouTube channel। I've been streaming since last 2 months and trying to be consistent with problem solving and discipline, importantly। So if it gives any sort of motivation, motivation, please consider checking out my YouTube channel। Then you can judge me if you want to follow or not, but consider checking out my channel। Okay, thank you so much। Good night, see you tomorrow। All the best for your placement journey and your career as well। Bye bye।